Good morning, students. Today in your science e-content we will discuss lesson number 7, living and non-living things. In this lesson we will learn characteristics, features of living and non-living things and some differences between living and non-living. Let us start our chapter. Students, you see many things around you. As you can say, table, chair, fan, cooler, AC, stone, pen, pencil, dog, cat, cow, pigeon, etc. So many things around you. And all of them have different features, or you can say characteristics. Based on some characteristics, we divided the things into two parts, living things and non-living things. In living things, we say plants and animals are living things. And non-living things like chalk, stone, pencil, copy, book, table, etc. Now we will study what are the similarities in living and non-living things. Means कि living और non-living things में क्या समानताएं हैं. First is both are made up of matter. That is, both have mass and they occupy space. Second, both are made up of smaller and simpler repeating units. Third, living things are made up of smallest structural units. They are called cells. While in case of non-living things, the smallest structural unit is called atoms. Now we will discuss characteristics of living things. Living things are called organisms. Students, कभी भी जब organism word लिखा हो, it means we are talking about living things. They may be plants or they may be animals. Now we will study what are the special characteristics of living things. First is, each living thing has a specific shape and size. Every organism has a definite shape and size. We can identify a dog, a cat, a frog, a butterfly, a mosquito by its shapes. Similarly, plants are also of different size and shape. We can see banyan tree or rose plant, grass, mango tree. They are of different size and shape. Second characteristic is living things are made up of cells. The body of living things is made up of tiny units called cells. Cell is the basic unit of life. Cells cannot be seen with the naked eye. We have to use microscope to see the cells. Depending upon the number of cells, organisms may be unicellular or multicellular. Unicellular means the organism is made up of one cell only. For example, bacteria, yeast and amoeba are unicellular. And also in case of multicellular, most of the organisms are formed of many cells. Their body may contain millions or trillions of cells. And each cell contains a living substance that is called protoplasm. Third is, living things are able to maintain their organization. It means they are able to withstand changes that occur in their surrounding environment, कि वो अपने आप को environment के हिसाब से adjust कर लेते हैं. This ability of living things is called adaptation. For example, if we get a cut in our finger, new cells grow and repair the cut. अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो थोड़े दिनों में जख्म भर जाता है और चोट ठीक हो जाती है. इट मीन्स उस एरिया में न्यू सेल्स ग्रो कर गए और हमारी जो चोट थी वो रिपेयर हो गई. सेम प्रोसेस हैपन्स इन केस ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. ऑल ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट. द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट इज कॉल्ड मूवमेंट. एंड देयर इज अ वर्ड लोकोमोशन. Students, there is a difference between movement and locomotion. Movement means we can move our parts, hands, legs like this. But locomotion means एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाना. Movement is shown by plants
and locomotion is shown by animals. Or we can say animals show locomotion as well as movement of body parts, but plants only show movements. Animals move in search of food, shelter, and many other reasons. Movement in plants is not obvious because plants remain fixed. They do not change their position. पौधे अपनी जगह नहीं बदलते, वे एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं. But their parts show movement. For example, shoot part. Shoot part means जो मिट्टी से ऊपर का पौधे का पार्ट है उसको शूट पार्ट बोलते हैं. वो हमेशा लाइट की तरफ मूव करता है, जबकि रूट पार्ट जो है, जड़ें जो होती हैं पौधे की, दे ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट एंड दे मूव्स टुवर्ड्स द सॉइल. मूवमेंट इज शोन इन मैनी प्लांट्स एज यू हैव सीन अ सनफ्लावर. इट मूव्स इट्स हेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सन. एंड टच मी नॉट प्लांट जो होता है उसको जब टच करो वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है. एंड ऑल्सो व्हेन ए बड ओपन्स इनटू ए फ्लावर, इट्स पेटल्स मूव आउटवर्ड्स. इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं. इस टाइप की जो प्लांट्स की मूवमेंट है इसको ट्रॉपिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड एनर्जी. All organisms need food to remain alive, grow and get energy for carrying out various life activities. आपने देखा होगा हम हैं चाहे जानवर हैं, सब खाना खाते हैं. खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है. वो एनर्जी की हेल्प से हम अपने काम करते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. पौधे भी खाना खाते हैं. प्लांट्स also need food and energy. They take energy from the sun, make their food using water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Plants को हम autotrophs भी बोलते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं. All animals and non-green plants, they are called heterotrophs because they can't make their food and depend on plants for food. Another main characteristic is living things respire to get energy. Students, in this topic there are two words, respiration and breathing. So let us discuss first this breathing. Breathing होता है कि हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं. This is called breathing. Respiration process होता है कि जो हमने खाना खाया हुआ है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है. देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस. दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय सेल्स टू डू वेरियस एक्टिविटीज. सो रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, बट ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ respiration. Different animals have different organs for breathing. For example, we breathe through our nose. Birds, snakes, dogs, cats, horses, they have lungs. Fishes breathe through their gills and insects breathe through their air tubes. Now the question arises, क्या plants को भी energy चाहिए? Yes, plants also respire to get energy. They also need oxygen for oxidation of food. In animals also we need oxygen for respiration process. In case of plants, during daytime, दिन के समय, plants neither take in oxygen nor release carbon dioxide. During daytime, plants ना तो ऑक्सीजन लेते हैं और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. कैन यू आंसर वाई? इट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और जो ऑक्सीजन उन्हें रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए चाहिए वो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जो बनती है वो उसको वो यूज़ कर लेते हैं. सो ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और उसके कुछ अमाउंट वो अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं.
प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट वेस्ट. Excretion means removal of waste and other harmful substances formed in the body. In animals, waste produced include undigested food, carbon dioxide, urea, excess of salt and water. These are expelled out in different forms from our body. Plants also excrete. They excrete oxygen during daytime and carbon dioxide at night through stomata. Some plants are able to store harmful or poisonous substances and excrete them as sticky secretions. Some plants store excess of minerals which accumulate मतलब इकट्ठा हो जाते हैं inside the cells as crystals. All living things remove metabolic waste products. In animals it is called excretion, and in case of plants it is called secretion. Plants secrete 3 types of excretory products: gum, resin and latex. Next special feature is living things respond to stimuli. All living organisms react to the changes in their surroundings. Now in this we will read 2 words, stimulus and response. स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो ऑर्गेनिज्म को कोई एक्शन करने के लिए इवोक करे, और जो वो एक्शन करता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं हम उसी समय अपना हैंड पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं. यहाँ पर वो जो गर्म पॉट है, हॉट पॉट है, वो हो गया हमारा स्टिमुलस, और जैसे ही हमने हाथ पीछे खींचा, दैट इज अवर रिस्पॉन्स. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दीज. फॉर एग्जाम्पल, एट नाइट when you switch on the kitchen light, cockroaches start running to their hiding places. और when you enter a dark room, अंधेरे वाले कमरे में, from a bright light area, कि बहुत बाहर रोशनी हो और आप अंधेरे वाले कमरे में जा रहे हैं, तो you are not able to see for some time. Similarly ऐसा ही होता है जब हम एक अंधेरे वाले कमरे से एक ब्राइट एरिया में आते हैं, we are not able to open our eyes. This is our response to the light. Now, do plants also respond to a stimulus? Yes, plants respond to the changes in light, temperature, touch, moisture, etc. फॉर एग्जाम्पल, लोटस फ्लावर, कमल का जो फूल होता है, दैट ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज बाय सनसेट. सिमिलरली स्टोमेटा ऑफ ए लीफ, जो लीफ के स्टोमेटा होते हैं जिनकी हेल्प से वो ब्रीथिंग करते हैं, दे ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई बाय प्लांट्स. The change allows an organism to survive or to escape from danger. Student, this is all in this first part of the lesson. Thank you. Have a nice day.